हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मोस्ट इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स शो में। हम बदलते हैं आपकी सोच, हम बदलते हैं आपका नज़रिया, हम निकालते हैं डर आपके मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स इज़ नॉट अबाउट नंबर्स, इक्वेशंस, कॉम्पिटिशंस और एल्गोरिदम्स। इट इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग। हमारे नए नए वीडियो के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को क्लिक करना मत भूलिए। Namaste friends, today we are taking a construction related with a isosceles triangle. Isosceles triangle जो है ये क्या है आपको मालूम चाहिए। What is the isosceles triangle? It is a triangle whose two sides are equal. जिसकी दो साइड जो है ये कैसी रहती है, इक्वल रहती है। Base angles are equal. So we had to construct an isosceles triangle with the given base. यदि आपको base दिया है और vertical angle दिया है, then how will you draw it? That we are going to see now. Now see here a construction. Construct an isosceles triangle with the base 8 cm long and the vertical angle is equal to 60 degree. So for that you draw a line. यहाँ कंस्ट्रक्शन भी आपको दिया है. Draw a line segment of 8 cm. Name a BC. पहले क्या करेंगे हम? You have to draw a 8 cm line segment. This is the line segment we are drawing here. And you take a 8 cm distance. We are taking here 8 cm distance. After that, draw a vertical angle. You have to draw isosceles triangle with the vertical angle of 50 degree. So this is the 50 degree we are given. हमको 50 degree दिया है. Extend this. This is the 8 cm distance. Now we have taken BC is equal to 8 cm. Extend. We have already extended this line. Beyond this B, you take a point here. If now after that extend a CB up to the point. If we have to extend CB up to the point. If now after that with the help of this protractor, draw a angle of FBE of a 50 degree. यहाँ रखना है आपको. You take a protractor and keep this protractor in this way and draw an angle of 50 degree. यहाँ कितना निकालना है आपको? 50 degree का एंगल निकालना है. Now you draw 50 degree angle. 10, 20, 30, 40, 50. This is the 50 degree angle. Draw this. This is a 50 degree angle. You take a point E. The point E लेना है. After that, with the help of this compass, you have to draw a angle bisector. जिनको angle bisector मालूम नहीं है, we have already taken a tutorial on this angle bisector. You can see that video. So for that you draw angle bisector. You draw in this way. Keep a needle here and draw arc in this way.
After that, you increase the some distance and draw an arc here this way. Now this is the point of intersection of two arcs. So join this. In this way. We have joined this. Now after that, ये वाला जो एंगल जो है, this is the angle. This angle, this one. You have to draw a similar angle at this point C. This is the point C. इस पॉइंट पे हमको क्या निकालना है? सिमिलर एंगल निकालना है. जिनको सिमिलर एंगल आता नहीं है, वी हैव ऑलरेडी टेकन अ वीडियो ऑन अ सिमिलर एंगल. Now you see here, you take a same distance here in this way. This one. We have taken this distance, this arc. With the help of this, you draw a arc in this way. देखिए कैसा आर्क लगाया हमने इस प्रकार. By taking a distance from this, कितना डिस्टेंस लेना है हमको? ये वाला देखिए, दिस इज द डिस्टेंस. ये इतना डिस्टेंस हमको लेना है. दिस इज द डिस्टेंस and we have to keep the same arc of this type. Now this point and this point, you join it here. It will be our triangle A, B, C. Now you highlight it. You measure it, you will find that it will be the 50 degree angle. ये आएगा आपका 50 degree angle. This is the base BC. It is a 8 सेंटीमीटर. और उन्होंने बोला है कि बेस जो है, बेस के सामने वाला एंगल कैसा चाहिए? दिस इज द बेस. एंगल अपोजिट टू द बेस इज 50 degree. Therefore we have drawn this construction when the base and the vertical angles are given. वर्टिकल एंगल दिया है आपको और बेस दिया गया है. इन सच अ केस, हाउ टू कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलियस ट्रायंगल दैट वी हैव सीन. If you have any type of difficulty, you may ask me in a comment box. I will try to solve your difficulty. हमारे नए नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे क्लिक करना मत भूलिए, so that you will get a notification for a new video. Thank you very much.